So yeah, in the previous class, we were discussing about the CMP. हम CMP point की बात कर रहे थे. And we have discussed many meridian given by Dr. Bull. So let's come back to the nerve degeneration meridian. So I'm bringing showing you nerve degeneration meridian. So we can see here nerve degeneration 1, 1A, 1B, 1C, 3. Okay. Then the nerve degeneration 2, nerve degeneration 3, and nerve degeneration 4. So this is the nerve degeneration meridian. Okay, our focus is CMP point. So in this image, we can see from the middle joint, if we are coming above, that is the location of CMP point. ये हमारे CMP point की location. Now you can see this image very clearly. This point is exactly located on the border of bone. Exactly on the border of bone. Whether you put from top to down or you put from side, this point is located on the border. अगर आप इस पॉइंट को देखें तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे पॉइंट हड्डी के बॉर्डर पर हैं. यू कैन सी, चाहे आप थोड़ा सा नर्व डिजनरेशन 1 आपको दूर दिख रहा होगा. ND1 is little far, we can see, but other all the point like ND1A, 1B, 1C, ND2, ND3, ND4, these all points are on the border of bone. Okay. Okay, let me draw one more point. चलिए मैं एक पॉइंट और ड्रॉ कर देता हूं बीच में. Okay, so I am taking one rounded point here and putting the point here. Exactly this point is I'm locating between ND3 and ND4. अगर आप इस पॉइंट को देखें, सो एक पॉइंट मैंने लिया और ND3 और ND4 के बीच में रख दिया on the nerve degeneration meridian. So now I want to tell you this thing. In the ND meridian, there are total 3 CMP points. How many CMP points? There are 3 CMP points. Okay. The one CMP point is here. So the CMP point number 1 is here. We can see. हमारा एक CMP point यहाँ पर है. We can see here. So this is the CMP point for all the nerves of the human body, all the peripheral nerves of the human body. Okay. But other than this, there are 2 more CMP points. One is the last point here, ND4. ND4. Between, we can see here, अगर आप इसकी लोकेशन को देखें तो ये 2 हड्डियों के बीच में है. This is located in between 2 bones. That is the ND4. And one point I have made in between. हमने इन दोनों बोन के बीच में बना दिया. तो let's discuss these 3 points. If you see, as per the Dr. Bull, अगर आप ये चार्ट देखते हैं, okay, इस चार्ट में देखिएगा. So this is the ND4 point. ND4. And this is the point which I made extra point in between ND3 and ND4. So the name of this is ND3A. And one point we already know. तो हमारे ND मेरिडियन में कुल कितने CMP पॉइंट होते हैं? कुल 3 CMP पॉइंट होते हैं. Now look at this image and what's written here.
अब आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको क्या पता चलता है? नंबर 1, ND1V. दिस पॉइंट इज लोकेटेड एग्जैक्टली ऑन द बॉर्डर ऑफ बोन. ये हमारी कई लोगों ने बोला था कि लोकेशन के बारे में बात करनी है. ओके, लोकेशन is not clear. So now you can see, as per this image, this point is located exactly on the border bone. Whether you put the point top to bottom or you put the point from the side. So whether we put point from top to bottom or from the side, that is ND1AV. What is written? CMP point for nerve degeneration. ये हमारा nerve degeneration का CMP point है. Then we are coming on the last point, that is ND4. ND4, that is the ABC, the ND4, that is CMP point for nerve degeneration of the cranial nerve. Cranial nerve. We will discuss what is the cranial nerve. And it is written here, ND3A is the CMP point of the nerve degeneration of parasympathetic ganglion of the head. इनका मतलब क्या है? अब हम वो बात करते हैं, right? So let's talk about what is the meaning of that. Okay. So I am taking you here and let's discuss about these 3 points. Then I will discuss the लोकेशन. तो देखिए, अब मैं आपको पहले लोकेशन ही बता देता हूं. ओके, लेट मी डिस्कस द लोकेशन ऑफ द पॉइंट. कुर्सी लेके बैठ जाओ. सो आई विल टेल यू हाउ टू पुट द seats or the magnets. So I'm turning the laptop down like this. So now we can see the hand here. हम यहाँ पर हाथ देख सकते हैं. और आगे, थोड़ा आगे तो और आगे. Perfect. So now we can see the hand here. Okay. पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा. If you have any doubt, so I will clear it. Okay. I'm talking about the nerve degeneration meridian, and for the nerve degeneration meridian, I have to focus on the index finger. मुझे index finger पे focus करना होगा, right? 1 minute. So this is the index finger. Now the outside meridian is the largest distant meridian that we know, and the inner side meridian is the nerve degeneration meridian. वो हमारा nerve degeneration meridian है. Okay. Now we are focusing on 3 points. So the point number 1, दूसरा दे दो. So let's see this hand, because we will find here. So we will feel the bone here, and this is the middle joint, and just above the middle joint here, that is the location of our first CMP point. हमारे एक CMP point की location यहाँ पर है. Is it visible or? Then the nerve degeneration meridian is crossing this margin of bone. It's going and touching the bone like this. ये हमारे bone को touch करते हुए ऐसे जाता है. Then the nerve degeneration meridian is going from the knuckle. So this is the knuckle, this is the knuckle. ये हमारी 2 knuckles हैं. So now it is passing from 2 knuckles and it's going like this in between the knuckles. And when it's going like this, it keep touching the bony part. ये हमारे bony part को touch करता हुआ जा रहा है. It is keep touching the bony part here, right? And it's going till the last. यहाँ पर एकदम last तक जा रहा है. अगर आप मेरे हाथ में देखो, look at my hand. मेरे हाथ में देखिए एक बार. So nerve degeneration meridian is starting from here and going like this. Then
It's a crossing this area in between the knuckles and reaching till the last, and the last point is the ND4. During this entire journey, it's touching the bony part. It's touching the bony part here. It's touching the bony part here. और ये हमारी सेकंड मेटाटार्सल बोन को टच करता हुआ ND4 पर समाप्त होता है. So this is the knuckle. ND3 will be here. ND4 will be here. There are two points. ND3, ND4. Now, ND3 will be here. We can see this is the bony part. Margin of bone, that is ND3, and this is the ND4. 2 point. Exactly in between, we have taken one more point, that is ND3A. यहां पर हमने बीच में एक पॉइंट ले लिया जिसे हमने बोला ND3A. ND3A. So this is the CMP point. This is the CMP point. And this one is the CMP point here. हमारे 3 CMP point है. On the nerve degeneration meridian, we have CMP point here. The second CMP point is the nerve degeneration meridian here. And the third CMP point here. Now I will show in this hand again. फिर से देखिएगा. So look at here. So the one CMP point is above the joint. So this is the joint. Then we can see the knuckle here. The second CMP point exactly after the knuckle ke baad. And the when this line is ending, we can feel the last depression. That is the third CMP point. ये हमारा तीसरा CMP point है. Right. तो हम इसमें मैग्नेट्स लगा सकते हैं. अब जैसे हमें अगर किसी को पेपर टैप लगाना है, so we can see this is the paper tap. Actually, this is the bigger one. We have to need a small one. So I am doing 2 parts. Okay. So this is the paper tap. And I am putting the methi seeds, fenugreek seed here. So we can say this is the fenugreek seed or the methi seeds. ये हमारा मेथी का दाना है. Now, if I want to put on the ND, the first CMP point of ND, so this is the first CMP point of ND here, above the joint here. We can pump a little and leave it. Now I will show in the other hand here. So I'm putting the methi seed, or you can put the star magnet, but some people are telling it is star magnet is paining, then we can put the methi seeds. And now look at the hand here. अब आप इस हाथ को देखिए. So this is the CMP point in the index finger. So we are putting the methi seed here, or we can put the star magnet here, and we can tie the paper tap. Begin little pump. So this is the begin like stimulation can be done by methi seed, moong seed, or small star magnet. Someone is having acute pain. You can take a buol magnet and sedate it. So there are, or needle, we can put the needle also, black pepper, we can put many things, right? Okay. Now when we are coming to the last, now look at the last here. I will take again paper tap. Let's make in 2 parts.
Now I'm putting the methy seeds once again. Actually, for the ND3, so for the ND4, the last point, we can take bigger seed like chana seeds. We can take the moong seeds. We can take the star magnet. We can take the bigger buell, mega buell magnet. I'm showing you just methi seeds because right now I have methi seed in my hand. Methi seed might be a little small for this. So look at here, methi seeds. And I'm going exactly in the last. Yeah, one methi seed is not enough for this. We can put 2-3 methi seeds if you want. Like instead of methi seed, we can make the star of methi seeds. We can put multiple methi seeds like this. और we can take one bigger seed like चना का दाना ले लिया या फिर मटर का दाना या राजमा का दाना ऐसे ले लेते हैं any, and we are going in the last here and we are touching the bone because we have to put the bone. When we are putting this, we have to touch the bony part. हमें bone को touch करना है इधर. We have to touch the bone. I am pressing the bone. It will be painful. That is the ND4. ये हमारा ND4 हो गया. Let's see once again. So I'm taking paper tap, putting multiple methi seeds. Even we can put multiple methi seeds. It will be very good because here we are not only working with the pressure, we are working with the energy of seeds. यहाँ पर हम केवल प्रेशर से वर्क नहीं कर रहे हैं, हम उस सीड्स की ऊर्जा से भी वर्क कर रहे हैं. So we have put the multiple seeds. Now look at here. So we are going in the last. हम लास्ट में जा रहे हैं, देखिए. And B has reached on the last. So in between these two bones, we have reached on the last. And we will touch the bony part. हम इस वाली हड्डी को टच करेंगे. Second metacarpal bone को टच करेंगे. And on the border of second metacarpal bone, we will put this methi seed. And if you press it, might be painful for many persons. So we have seen one CMP point, second CMP point, and one CMP point in between here. Because we told ND3, ND4. In between we have ND3A here. यहाँ पर हमारा ND3 है. Right. It is the ND3A. So let's take one more paper tap. So I'm putting the methi seeds for ND3. Multiple methi seeds, or we can take only one chana seed. Now look at here. So here will be 3, here will be 4. So we can see here will be 3, here will be 4. In between there is a 3A. I will touch the bony part and I will put the methi seeds here. Okay. So my focus right now is tell you about the 3 CMP point of nerve degeneration. It's very easy to detect. Now we can put the needles, we can put the seeds, we can put the star magnets. Sometimes a single star magnet is enough. Okay. So actually Dr. Bol never used color. But if you have your concept, then you can use it. But I have seen these points are reacting very nicely with the seeds, with the magnets, or with the needles, or with the electric pen, which I will demonstrate you later on. Okay. We will demonstrate it. Electric pen. तो हम इन पॉइंट का स्टिमुलेशन कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं इन तीनों सीएमपी पॉइंट में आखिर अंतर क्या है ना. अब हम इनकी बात करते हैं कि कब ऊपर वाला करना है, कब बीच वाला करना है. एक तो होता है हनुमान जी का पर्वत,
संजीवनी बूटी कहाँ है, नहीं समझ में आया, पूरा पर्वत उठा लिया. Okay, one is this. We don't know. Person is having some pain. We don't know how to treat it. So what we'll do? We will take the long paper tap. We will put 2-3 chana seeds, 1, 2, 3, and we'll put here like people are putting in the sujok. We will take 2-3 chana seeds and put here like this. Chana seeds 1, 2, 3, 4. एक काम करो. I will show you this shortly, but let me come back to the nerve degeneration meridian. Some person is having some problem of the nerve. So what we can do, we can put the methi seeds in the linear pattern. You are knowing that. So we'll put the methi seeds like this. We'll arrange like this. जो लोग रोज सीड लगाते हैं ना, वो एकदम फट से एक्सपर्ट होते हैं, फटफट कर लेते हैं ऐसे. Okay. So now I will put the paper tap like this. तो देखिए लाइन बन गई पूरी सीड्स की. Now I will put these seeds in the entire nerve degeneration meridian. पूरे के पूरे nerve degeneration meridian में हम लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा. Any problem of the nerve. So we will put this like this on the side. Okay. Our target is touching the bone. अगर आपको थोड़ा ऊपर से भी लगाना चाहते हो, but you have to touch the bone. See. ये देखिए पूरा मैंने नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन कवर कर दिया यहाँ पर. आई हैव कवर्ड द एंटायर नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन. और अभी इसको हम प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा पेन हो सकता है. नाउ सपोज दिस इज द चना सीड्स. ये देखिए चने के दाने. ऐसे चने के दाने हमने इसमें लगा दिए. 2-3 चने के दाने लगा दो. पहले तो आप एक एक चना का दाना सिर्फ लगा सकते हैं यहाँ पर. जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर. So this is the nerve degeneration 3, nerve degeneration 4. एक्चुअली थोड़ा ऊपर आएगा nerve degeneration 4 यहाँ पर. मैं चने का दाना लगा के बताता हूँ आपको. So nerve degeneration 3, nerve degeneration 4. This is the nerve degeneration 4. Okay. हमने एक दाना लगा दिया चने का. अब हमने बीच में भी लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल 3A. एक चने का दाना लिया. So nerve degeneration 3, nerve degeneration 4 in between 3A. हमने हड्डी को टच करता हुआ एक लगा दिया 3A. So this is the nerve degeneration 3A. तो 3 आ गए. नर्व डिजेनरेशन का ऊपर वाला ND point of nerve degeneration means ND. This is also ND. This is also ND. Nerve degeneration. Okay, so 3 nerve degeneration point हो गए हमारे. Okay. Now, if you want, you can put multiple chana seeds like that. आपने चने को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया, जैसे हमने मेथी अरेंज की थी. ऐसे पेन से हम अरेंज कर सकते हैं. तो पेन से क्या होता है, वो एक लाइन में आ जाते हैं. ऐसे देखो एक लाइन में आ गए ना. अब हाथ टेबल पे करोगे तो और जल्दी हो जाएगा. जैसे ना ये टैब है, इसके ऊपर करके दिखा था. ये थोड़ा सॉफ्ट है ना, इसलिए थोड़ा सा. लाइक सपोज आई एम डूइंग द हार्ड सरफेस. सी इट्स हैपनिंग वेरी इजीली. सी लुक इट हियर. See,
अब हमने इसको चिपका दिया, ऐसे रखा और पूरे स्टिक हो गए इन द लाइन. ना आई कैन पुट दूसरा दो. सो दिस इज द सेकेंड एंड थर्ड. तो इसमें हम पूरे में लगा देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा ऐसे करना. ऐसे ये पूरे में लगा दिया हमने. वी हैव टू कीप मेक श्योर टचिंग द बोन. बोन को टच करना है. ये हमने लास्ट तक लगा दिया. ये देखो, अगर यहां तक है तो यहां तक लगा, पूरा का पूरा लगा. तो हमने देखा कि आइदर यू कैन स्टिमुलेट द पॉइंट इंडिविजुअल, और if you are not for you don't know not remembering, then put multiple point. Now we'll see the importance of all the 3 point. अब हम तीनों पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस समझते हैं एक बार. फिर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछ लीजिएगा, है ना. ओके. तो हमारे 3 पॉइंट हमने जो डिस्कस किए हैं. अपर वन इज nerve degeneration, B for Bombay. Let's see in this image. देखो, कलर थेरेपी का तो आप अभी हम इस समय, पहले आप पॉइंट का तो समझ लो, इसको समझ लो. ND1V CMP पॉइंट है, ये हमने ऊपर वाला देखा. ND3 है CMP पॉइंट एंड ND4. गॉट इट. सो नाउ let's come back here and see very wonderful things about nerve degeneration meridian. I will bring your attention on the normal problem of the nerve first, then we'll go specifically. Let's see here कि नर्व की प्रॉब्लम क्या होती है. लाइक डायबिटिक न्यूरोपैथी. ओके, द पर्सन ड्रिंकिंग अल्कोहल, दे सफर विद द नर्व प्रॉब्लम. कभी कभी हर्पीज सुना है आपने, हर्पीज बीमारी होती है. हर्पीज के बाद, हर्पीज की भी जो बीमारी होती है ना, वो नर्व में फैलती है. सो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, हर्पीज गई लेकिन उसका दर्द बना रहना. यस, हर्पेटिक न्यूरल्जिया, वो भी नर्व में हुई. साइटिका तो सब जानते हैं, साइटिका न्यूरल्जिया. बुलाऊं, बता दूं तो आ जाए. साइटिका न्यूरल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, पार्किंसन डिजीज, और कोई भी नर्व की प्रॉब्लम हो. ये हमने सिर्फ कुछ प्रॉब्लम बताई है. देयर आर 2 टाइप ऑफ द नर्व इन द ह्यूमन बॉडी. हमारे शरीर में 2 प्रकार की नर्व होती है. पहली होती है, द फर्स्ट नर्व इज कॉल्ड सेंट्रल नर्व्स. ब्रेन में नर्व होती है कि नहीं होती? होती है. स्पाइनल कॉर्ड में नर्व होती है कि नहीं होती? होती है ना. यस, दे कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेन ऑफिस. ये हेड ऑफिस होता है ना, हेड ऑफिस. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व कहां होती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में. लाइक पार्किंसन डिसीज, ब्रेन की नर्व में प्रॉब्लम, स्पाइन की नर्व में कंप्रेशन. सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मींस मेन ऑफिस. और फिर होती है पेरिफेरल नर्व. पेरिफेरल नर्व यानी मेन ऑफिस से निकलने वाली नर्व, हाथ में, पैर में, हर जगह, हर ऑर्गन में. दे आर कॉल्ड पेरिफेरल नर्व्स. सो मल्टीपल नर्व्स आर गोइंग ऑल अराउंड द बॉडी. जाती है ना कि किसी को हाथों में नमनेस आ रही है, पर्सन इज सफरिंग विद द नमनेस इन द फीट. डायबिटीज वाले पेशेंट लोगों को पैरों में नमनेस आती है, कुछ भी फील नहीं होता उनको, चोट लग जाए पता नहीं चलता उनको. राइट. सो वेदर द प्रॉब्लम ऑफ द सेंट्रल नर्व्स or the peripheral nerves, in both condition we can use this. That is a
nerve degeneration meridian. Now let's see here. So there are 3 points we discussed: ND1V, ND3A, ND4. ND1V is nerve degeneration main point, ये हमारा सबसे मुख्य बिंदु है. ND3A is for parasympathetic ganglia of the head. What is the meaning of that? We'll discuss. And ND4 is for cranial nerve. किसके लिए? cranial nerve. ये 3 लाइन में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, बहुत बड़ा रहस्य. चलिए बात करते हैं. Let's talk about these 3 things. So ND1V is main point. It is good for peripheral nerve and the central nerve. Just I discussed with you कि हमारे पेरिफेरी की नर्व में कोई प्रॉब्लम हो जाए या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा 1V ऊपर वाला पॉइंट. नाउ द सेकेंड पॉइंट ND3A क्या लिखा है? पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया. कहां का? हेड रीजन का. हेड रीजन. तो जब भी पैरासिम्पैथेटिक की बात आती है, ऑलवेज रिमेंबर whenever we talk about the parasympathetic nerves, the biggest parasympathetic nerve is, do you know that? What is the name? हमारे शरीर की सबसे बड़ी एक नर्व है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. डू यू नो द नेम? दैट इज वेगस नर्व. वेरी नाइस. वेगस नर्व. वी आर हैविंग vagus nerve, which is the longer parasympathetic nerve. What is the parasympathetic meaning? The parasympathetic means who is relaxing your system. जो आपके सिस्टम को रिलैक्स करे, सिस्टम को काम डाउन करे, उसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व. ओके. जैसे जब आप रिलैक्स होते हैं, मन शांत होता है, जब आप एकदम प्रसन्न चित्त होते हैं, कहीं हॉलीडे पर जाते हैं, कहीं ग्रीनरी में बैठते हैं, है ना, मन प्रसन्न होता है, उस समय आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है. सो ड्यूरिंग द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, like the vagus nerve activation, we are very calm, we are very peaceful, our heart is relaxed, our lungs is relaxed, we are eating a lot because our stomach is also relaxed, like we are going on the holiday. So if the person is not relaxed, we can use this point 3, the middle point. If the person is having some problem with the vagus nerve, if the person is having some problem with the parasympathetic system, the relaxation system is not working properly, having lots of anxiety, उसको एंजाइटी हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, घबराहट हो रही है, एग्जाम टेंशन है. बताइए और क्या हो सकता है? जब आप रिलैक्स नहीं होते तो क्या होता है? कैन यू टेल मी 1 or 2 things? When you're not relaxed, what is happening? Tell me. एंजाइटी, पाल्पिटेशन, हाई ब्लड प्रेशर होता है कि नहीं होता? इंसोम्निया. These all condition we can work with the middle point. हम मिडिल पॉइंट का यूज कर सकते हैं. The middle point is the point who is very much useful for relaxing our system. हमारे सिस्टम को काम डाउन करता है, हमारे मन को शांत करता है, सिस्टम को काम डाउन करता है. What's written here? Panic and anything which is making you panic attack, घबराहट, हेडिक, सिर में दर्द हो रहा है, उन सभी चीजों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं.
किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं? वी कैन वर्क ऑन दिस ND3A। हम ND3A का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द ND4। अब हम ND4 पर आ जाते हैं। इट्स रिटन ND4 इज द नर्व डिजनरेशन पॉइंट फॉर ऑल द क्रेनियल नर्व। हमारी जितनी भी क्रेनियल नर्व होती हैं उन सभी का यह नर्व डिजनरेशन पॉइंट है। वी आर हैविंग 12 नर्व, जिन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। हमारे ब्रेन में 12 क्रेनियल नर्व होती हैं। ओके, सो द 12 क्रेनियल नर्व वी कैन कंपेयर विद द 12 मेरिडियन। हम इन 12 क्रेनियल नर्व को अपने 12 मेरिडियन से कंपेयर कर सकते हैं। वी आर हैविंग 12 मेरिडियन, राइट, एज पर द TCM. So in this way, the ND4 point, the last point, is very, very effective and it will relax all the 12 cranial nerve. हमारी पूरी की 12 का 12 nerve को relax करेगा. Now this is very important. Now I will show you one chart and it's a really very, very important information. अब आप इस चार्ट को देखिएगा। ये देखिए, जब हमारी पहली क्रेनियल नर्व गड़बड़ होती है तो स्मेल सेंसेशन गड़बड़ हो जाता है। We will use ND4. If the person is having vision problem because of the second cranial nerve, we will use ND4. If the person is having some problem like आंखों की मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाना, जैसे कि डिप्लोपिया, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मतलब एक आंख इधर जा रही एक आंख इधर जा रही है, डिप्लोपिया। और स्ट्राबिस्मस, भैंगापन, क्योंकि आंखों की जो मसल्स हैं वो आंखों को ठीक से मूव नहीं कर पा रही हैं। द मसल्स ऑफ द आई इज नॉट एबल टू मूव। So if you want to bring the proper eye movement, we will able to work with some nerves. So we will use ND4. So ND4. There are many nerves like 3, 4, 6 are connected with the eye movement. If the person is having any problem on the face, like trigeminal neuralgia, दांतों में दर्द होना, चेहरे का दर्द होना, जॉ का दर्द होना, that is because of the fifth cranial nerve, we will use ND4. The seventh nerve is the facial nerve, facial paralysis, any problem of the face, we will use ND4. The eighth nerve is the nerve of ear, any ear problem, deafness, we will use ND4. The ninth nerve is connected with the throat, हमारे गले से connected है. If the person is having any problem of the throat, we will use ND4. Vagus nerve, again, for the vagus nerve also we will use ND3A, ND4 both. For the 11th nerve is supplying the shoulder region, we will use ND4. So I will make the chart here. For your easy understanding, I will make the chart here so you will able to understand. हम ND4 का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, राइट? तो देखिए, लेट्स सी हियर द क्रेनियल नर्व नंबर 1, हमारी जो क्रेनियल नर्व नंबर 1 है, क्रेनियल नर्व नंबर 2, क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So here the nerve number 1 is connected with the smell and nose, हमारी नाक की कोई प्रॉब्लम, स्मेल की कोई प्रॉब्लम. The nerve number 2 connected with the vision, means connected with the eyes. Now I will make with a different color so that you can understand. Let me make with a green color. The third number is for eyes.
The fourth number is also for eyes and the sixth number also for eye. This is the eye movement. कहते हैं ना कि आंखों की ठीक से मूवमेंट नहीं हो रही है, eye movement. So we will use ND4 in all condition, right? The fifth nerve is the nerve of face, जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व. ट्राइजेमिनल हमारे फेस को ही कंट्रोल करती है. अगेन 7 नंबर इज अगेन फॉर फेस, जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं. दैट इज कॉल्ड फेशियल नर्व. द 8 नर्व इज फॉर ईयर और डेफनेस, कानों का बहरापन. तो हम ND4 का यूज करेंगे. 9 इज फॉर थ्रॉट, गले में दर्द होना, थ्रॉट इन्फेक्शन होना, एनी प्रॉब्लम ऑफ द थ्रॉट एरिया. 10th is the biggest nerve, which is very important nerve to relax the entire body. 11th nerve is for shoulder pain, shoulder and neck. And the 12th nerve is for जो हमारी 12वीं नर्व होती है, वो किस लिए होती है? For problem of, I will write in the simple language, the problem of colon, the problem of digestion and the problem of tongue. अगर आपको इसमें कुछ understanding में problem, you can unmute yourself and you can ask me right now. If you're 1 minute, let me check whether you can mute yourself or not. Sir, if the blood vision is due to some other problem, can that also be treated? Yeah, so blood vision, if the vision problem, we will use cranial nerve number 2. So for that, we will use ND4. Definitely we'll use ND4. So my question is, if it is a secondary problem, like blurred vision, you see in multiple sclerosis and dizziness. So in all those cases, Yeah, can actually, we we... will use it. Definitely we will use it. Okay. Because multiple sclerosis also the problem of nerve, right? We will use Yes. Definitely we'll use it. We can use it. आपको Thank you very much, sir. During the COVID-19, many persons suffer with a smell problem, right? Yeah. So That is due to lung. Due to lung. So person suffer with the smell problem. So for improving the smell, we can use ND4. Thank you, sir. Thank you very much. और आई ड्राई तो हो जाती हैं? जी क्या बोल रहे हैं? ड्राई आई. हाँ, तो अगर हम बात करें विजन की और आंखों की किसी भी प्रॉब्लम की, वेदर यू आर टॉकिंग, सी किरणें नर्व क्या करती है? हमारी आंखों, हमारे विजन को कंट्रोल करती है. इट्स कंट्रोलिंग द विजन, इट्स कंट्रोलिंग द आई एरिया. अब ड्राई आईज की बात करोगे, अगर ड्राई आईज नर्व की प्रॉब्लम नहीं है, अगर लगता है कि आपको नर्व की प्रॉब्लम है तो हम कर सकते हैं, राइट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्व. हम किसकी बात कर रहे हैं? नर्व की. वी आर टॉकिंग रेटिना में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो? yes. So we can use for, if you want to work on the any problem of the eyes, and if you are not up, you are confused, then you use ND4. There is no any problem. अगर आपको लगता है कि किसी भी क्रेनियल नर्व की प्रॉब्लम है तो आपको ND4 को जरूर यूज करना है, बिकॉज ND4 इज वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट फॉर क्रेनियल नर्व. Like suppose someone is, my question now, let me ask 2-3 questions, then you ask. Okay, my question is this: one person is suffering with the facial paralysis. Can we use ND4 or not? Yes. Yes. Everyone, yes? Yes. Okay. Yes. One person is suffering. One person got some. One person suddenly got attack of vomiting, lots of vomiting, and after that got deafness.
Can we use ND4 or not? Yes. Yes. Yes, we can use because of continuous deafness. Ultimately, maybe there is a compression on the nerves. But it's a deafness is because 1 minute, 1 minute. पहले मैं आपसे प्रश्न पूछा फिर आप पूछेगा. One person is suffering with a throat infection. Can we use ND4 or not? No. Yes, sir. Yes, sir. Now Very there are nice. two conditions. One person is suffering with a throat infection and person is suffering with the voice loss. एक ही आवाज चली गई है, पैरालिसिस हुआ और उसकी आवाज चली गई. हम यूज कर Yes, we सकते हैं can क्या? use. ND4 यूज Yes. कर सकते हैं? Yes. Yes, Yes, sir. एक को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, क्या हम ND4 यूज कर सकते हैं? yes. No. We can use yes for everything for throat. इतना ज्यादा दिमाग मत लगाए. Just go No. very simply. You go very simply. For any problem of throat, we can use ND4. Right? Sir, But if 3, you want to 4. go very specifically, very specifically, yes. Any problem of the nerve? Okay. क्या होता है कई बार मैं आपको बताऊं कि नर्व कंप्रेशन से भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है. कई बार नर्व कंप्रेशन से भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है बिकॉज थ्रोट इज हैविंग nerve supply from the cervical region. My question, one person is suffering with a shoulder pain and the frozen shoulder, we can use ND4 or not? Yes. Yes, sir. Because of Yes, sir. 11 Yes. cranial nerves supplying this area. 11. Yes. Yes. So can we have that, whatever the table you showed? What? Can we have a copy of that? This PDF will be given to you. Okay. Okay. So that's why I have written there only, so that when I will give PDF, everything is written for you, right? Okay. So now my question is this: one person is suffering with a diplopia. Diplopia means double vision. Can we use it or not? Yes. Yes, sir. Definitely we can, Yes, sir. we can use it. One person is having एक व्यक्ति को हमेशा ही सर्दी कफ बना रहता है, उसकी नाक हमेशा ही बंद रहती है, अब धीरे धीरे उसका स्मेल लॉस होने लगा. Can we use ND4 or not? Yes, sir. Can we Yes, use sir. ND4 or not Yes. if the person is having always cough and now losing the smell? We can use it? Yes. Yes, sir. Now we can use it definitely. So now in this way we can use this ND4 for cranial nerve. तो क्या होता है, ये बताने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हम बोलते हैं cranial nerve, तब भी हमारे दिमाग में सेट नहीं होता कि 12 cranial nerve के क्या क्या काम हैं. तो ये आपको दिमाग में सेट करना है. You have to set these all things in your mind. Then what is the work of 12 cranial nerves, and then each and every cranial nerve, and you have to use ND4 point. This point is very much effective. That's why very effective point. इसलिए आपको मालूम है कि अगर हमें cranial nerve को रिलैक्स करना है, we want to relax all the cranial nerve. ऐसे बोलो व्यक्ति को, ऐसे हाथ रखो, इसको दबाओ और ऐसे इसको दबाओ, ऐसे alternately here, here, ND4. Then दोनों हाथ एक दूसरे में रखें, ऐसे उंगली से इस तरफ, राइट उंगली से लेफ्ट, लेफ्ट So उंगली now, से राइट. तो हम किसी भी तरह Sir, की ये हाँ. पूछना था, this third, fourth, and sixth, all three are written this eye movement. So like it's a different way of eye movement, means which particular specific एक्चुअली something. क्या होता है, एक फॉर्मूला है. आंखों के चारों तरफ जो मसल होती है ना, आंखों के चारों तरफ बहुत सारी मसल्स होती हैं. देयर आर मेनी मसल्स अराउंड द आईज. सुपीरियर मसल, इंफीरियर मसल, मिडिल मसल, लेटरल मसल, ऑब्लिक मसल. उसका एक फॉर्मूला भी है, SO4 LR6 रिमेनिंग 3. SO मीन सुपीरियर ऑब्लिक मसल, SO4 supplied by fourth nerve, lateral rectus nerve supplied by sixth nerve, remaining all eye muscles supplied by third nerve. Right? I will write this formula in the group.
Ultimately, there are multiple muscle around the eyes, and there are 3 nerves supplying the eyes: 3, 4, and 6. If any nerve is having problem, suppose 3 nerve is having problem, 4 nerve is having problem, 6 nerve having problem, suppose this muscle is weak or this muscle is weak, any one muscle is weak, तो जो भी मसल वीक होगी तो दूसरी मसल खींच लेगी ना आंख को अपनी तरफ, है ना। मेरा ये हाथ मजबूत, ये हाथ कमजोर, अब मैं ऐसे धक्का मारूंगा तो जो मजबूत होगा उधर मेरा हाथ चला जाएगा। कहते हैं ना वो रस्सी हम खेलते हैं ना, रस्सी का गेम, तो जो मजबूत होगा वो खींच लेता है रस्सी को अपनी तरफ। The powerful person will pull the rope. So that's why diplopia is happening if the eyes are not properly in the coordination, if some muscle is having problem. Why? Because there are poor nerve supply. There are formula SO4 LR6 remaining 3. तो आंखों की सारी मसल को ये 3 नर्व भी सप्लाई करती है। तो जब भी हमारे पास स्क्विंट के पेशेंट आते हैं, भेंगापन के पेशेंट आते हैं, so we are thinking, okay, which muscle is having some problem, okay, but here we are having very good freedom whether any cranial nerve, we have one point. But sir, blind persons we can't revive, na? Blind persons we can't revive their eyesight. Actually, we cannot tell with a one statement. Okay. It depends on the conditions that क्या होता है कि हम जो क्या कंडीशन है, why is the blindness, if there is a 100% nerve degeneration happen, Okay. then it might be difficult. Okay. Difficult. कठिन हो सकता Okay. है. Okay, fine. Now I will tell you one more thing. Is it clear about the 12 cranial nerve set? Yes. So let's see this chart here. I was telling you do this. So with the help of this we can activate. अगर कोई भेंगापन है, if the person is having squint, you give this homework. You tell that kids, okay, do like this, praise this, praise this, praise this, alternately praise this. So praise this. If the person is having squint. If the person is having vision problem, you can give this homework. If the person is having ear problem, deafness, you can give this homework. If the person is having some voice problem, want to improve the voice, throat, you can give this homework. Shoulder pain, you can give this homework. It's a very simple homework. If you don't want to give the homework, you do for the patient. Put the needle, put the star magnet, do something. Is it clear? ND4. Now second, so in this way, एज कोई मायने नहीं। एज जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु तक हम ये थेरेपी कर सकते हैं। देयर इज नो एज बार। ओके, सो नाउ लुक एट हियर फॉर दी ऑल प्रॉब्लम, if the person is having indigestion problem, shoulder pain, not having relaxation, throat problem, ear problem, face problem, the problem with the eye movement, these all problem we can use ND4. हम ND4 का प्रयोग कर सकते हैं। ये नर्व के नाम हैं, ये आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। इन नर्व के नाम भी हैं। जो लोग नर्व के नाम याद करना चाहते हैं वो कर लेना याद, जिनको कठिन लगता है वो छोड़ देना। राइट, सो दी आर द nerves. Now let's come back here. Okay, fine. तो देखिए ND1V, ND1V, there are 3 nerve degeneration points. 1B is for overall nerve health. हमारे शरीर की जो कोई भी नर्व की प्रॉब्लम है आप ND1B तो लगा ही सकते हैं। Then middle point ND3A for parasympathetic dysfunction. अब ये मैं आऊंगा इस पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। Now ND4 for all the cranial nerve. Let's come back to the ND3A. अब हम ND3A पर आ जाते हैं। Parasympathetic dysfunction. Now tell me, person is telling, oh, I'm not having proper sleep. We can activate it or not?
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? एक हाथ ऐसे रखो, एक हाथ ऐसे रखो और दबाओ। ठिशक्याऊं, ठिश ठीक। कितना देर तक करना है सर? अरे 2 मिनट करेगा ना बेड पे बैठ के, हाँ, ओके। ऐसे करना चालू कर देगा। 2 मिनट्स करके देखना आज रात को If you बिस्तर पे। don't get sleep, so we can do that. Yeah, you can do this. Even you get sleep. Before doing this, you can balance your all the parasympathetic nerves. कहते हैं ना कि रात को सोने के पहले एकदम मन शांत होना चाहिए। मेरे पास पेशेंट आते, मैं ये होमवर्क देता हूँ उनको, और बोलते वो पेशेंट इज टेलिंग मी डॉक्टर आई एम टेकिंग स्लीपिंग पिल। ओके, यू आर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, नो प्रॉब्लम। जो रूल्स नंबर 1, आपका मोबाइल कम से कम सोने के 2 घंटे पहले दूर कर दो आपसे। रियली इफ यू वांट टू डू हैव द प्रॉपर स्लीप, बिकॉज उसमें जो लाइट्स, ब्लू लाइट्स होती है ना, वो रेडिएशंस होते हैं ना, वो नींद को भगा देते हैं। नंबर 1, कीप द मोबाइल अवे एटलीस्ट 2 hours बिफोर यू स्लीप। सेकेंड, डू लिटिल वॉकिंग। थोड़ा शरीर को थकाना भी जरूरी होता है ना, थोड़ा सा शरीर में वॉकिंग वॉकिंग कर लो, हल्का फुल्का। शाम को खाना खाने के बाद डू द लिटिल बिट वॉकिंग आफ्टर हैविंग द मील। ओके, एंड व्हेन यू आर फुल्ली रेडी फॉर स्लीप, जब भी आप स्लीप करने जाते हो, थोड़ा शॉवर ओवर ले लो, रिलैक्स हो जाओ। टेक द शॉवर, टेक लिटिल बिट घी और ऑयल, डू द फीट मसाज फॉर 5 minutes and sit on the bed. Sleeping, keep the sleeping pill with you, because the person taking sleeping pill every day, and do this for 5 minutes. If you are getting sleep, then just sleep. If you are not getting sleep, then take the sleeping pill. Because people are taking sleeping pill and they are telling, I can't sleep without sleeping pill since 5 years. मैं 5 साल से नींद की गोली के बिना सो नहीं पाता। और जब मैं उनको ऐसे बोलता हूँ, अब उनको ये कठिन होता है, तो मैं बोलता हूँ सब दबाना है, ये भी दबाना, ये भी दबाना, ये भी दबाना, सब दबा देना सर। ठीक है, तो पूरा का पूरा, ये भी दब गया, ये भी दब गया, ये भी दब गया, इसमें भी कुछ तो हो ही जाएगा ना। इससे उनका स्प्लीन, हार्ट सब मजबूत हो जाएगा। एक्सीलेंट फॉर्मूला फॉर स्लीपिंग, बहुत अच्छा है, करके देखना। आप बोलोगे वाओ, दिस इज डॉक्टर बोल, है ना, ये डॉक्टर बोल है। डॉक्टर बोल ने कहा द मिडिल पॉइंट इज वेरी गुड फॉर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, very effective for parasympathetic nerve, and the biggest parasympathetic nerve is the vagus nerve, and vagus nerve palpitation. Oh doctor, I'm getting palpitation. Okay, do this. Oh, I'm not relaxed, I have exam, I'm having anxiety. Do this. Okay, for any condition which is making you restless, do this. और जब आपके पास आए तो यहीं पर निडल लगा देना, सीट्स लगा देना, मैग्नेट लगा देना, अपने इलेक्ट्रिक पेन से स्टिमुलेट कर देना। अगर आपको पेशेंट को नहीं बताना है कि नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दो तो अच्छा रहता है। सब चीजें नहीं बताना। इलेक्ट्रिक पेन से कितनी देर करना होता है? इलेक्ट्रिक पेन से 1 minute 30 seconds to 2 minutes, it depend on the point. 30 seconds is also enough. और कितने मोड पे, कौन से वो मोड तो पे? मैं हर्ट्ज 1 की 2 बात हम 3? देखेंगे, करेंगे बात, है ना। अभी तो क्या होता है, हम पेशेंट की क्षमता के अनुसार, क्योंकि पेशेंट ही बोल देगा नहीं नहीं बस डॉक्टर साहब है, तो बोल दो नहीं नहीं, उसके अकॉर्डिंग, राइट। अदरवाइज, so you have many way to stimulate this point. ND3, a very excellent point. Now I bring your focus on one more thing here. Let's see. So focus on parasympathetic dysfunction, especially in the head or the vagal zone. अगर ये आपने करवा दिया तो बीपी रिलैक्स कम हो जाएगा, डायबिटीज में फायदा मिलेगा, all the metabolic disorder you will see very good results, because nowadays people are suffering with all these problems: diabetes, blood pressure, anxiety, insomnia, because they are not relaxed, क्योंकि वो रिलैक्स नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है उनको इतनी सारी। ओके फाइन। अब फिर से देखिए इस चार्ट को, देखिए ये थोड़ा बड़ा चार्ट है। व्हाट्स रिटन हियर? द पैरासिम्पैथेटिक नर्व आर 3, 7, 9 and 10. ओके, हमारी जो 12 क्रेनियल नर्व होती है ना,
12 क्रेनियल नर्व में 4 क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक होती हैं, इन चारों को ये रिलैक्स कर देता है। तीसरी नर्व आंख की, 7वीं नर्व फेस की, 9वीं नर्व गले की, 10वीं वेगस नर्व। द 4 नर्व्स आईज, फेस, थ्रोट एंड वेगस नर्व। तो अब मैं आपको बताता हूं, अब आपने ये किया, your face will become very bright, very relaxed, because remember one thing, parasympathetic means you are increasing the blood circulation। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है कि आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। फेस मुरझा जा रहा है, कमजोर हो रहा है, there is a no circulation on the face, getting pigmentation and multiple problems। Improve the blood circulation of the face via this middle point, because this will give energy to the facial nerve, हमारी facial nerve को energy देगा। If the person is not having proper facial symmetry, हम सबकी थोड़ी बहुत फेशियल सिमेट्री गड़बड़ है, आप मेरा भी फेस देखोगे ना, थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा, थोड़ा हो जाता है, सबका सबका होता है, एवरीवन इज हैविंग लिटिल बिट डिस्टर्ब फेशियल सिमेट्री। वी कैन वर्क मिडिल पॉइंट, इंप्रूव योर फेशियल ग्लो, फेशियल नर्व, फेशियल सिमेट्री, इंप्रूव योर मूवमेंट ऑफ द आईज, इंप्रूव योर थ्रोट। अब मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते मेरा गला थक गया, okay, I can improve my throat, I can improve my voice with this. The patient is having problem of the voice, you can improve with the help of this point and vagus nerve. That's why 4 nerve, it's written in your PDF which I am going to give you, लेकिन समझना जरूरी है ताकि आप PDF को भी समझ सको। 4 नर्व को ये, क्योंकि हमारी जो 12 नर्व होती है ना क्रेनियल नर्व की, उसमें से 4 नर्व पैरासिम्पैथेटिक होती हैं। आउट ऑफ 12 क्रेनियल नर्व, there are 4 nerves are parasympathetic. 3rd nerve, 7th nerve, 9th, 10th nerve, which is written here. You can see this. 3rd nerve, 7th nerve, 9th nerve, and the 10th nerve. 3rd nerve is the nerve of eye movement. The 7th nerve is the facial nerve. So any problem of the face. 9th nerve is the nerve of throat, गले की nerve, and the 10th is the vagus nerve. तो कभी भी किसी को पैनिक अटैक हो जाए, कभी कभी कोई है ना, जब घबराता है ना, जैसे कोई घबरा गया, उसकी आवाज नहीं निकलती, निकलती है क्या? When you are not relaxed, जब आप एकदम रिलैक्स होते हैं ना, एकदम बिंदास बोलते हैं, आपकी जो बोलो वो अच्छा निकलता है। और जब घबराए होते हैं ना, तो आपकी आवाज नहीं निकलती है ना। जैसे किसी को आपको बोल दिया चलो स्टेज पर बोलो बोलो कुछ, है ना, सडनली समवन इज टेलिंग यू कम स्पीक ऑन द स्टेज एंड यू आर हैविंग फियर, स्टेज फियर, you are not relaxed, then you will not able to speak because your 9th nerve, you do like this, okay, now you can speak very properly, okay. Middle nerve. So whether you want to improve your throat, you want to improve your face, you want to improve your movement of the eyes, or you want to improve vagus nerve. The 3rd nerve is the nerve who is supplying almost, actually I told you the formula of the eye, SO4LR6 remaining 3. There are many muscles around the eyes. The most of the muscles supplied by 3rd nerve. हमारी आंखों के चारों तरफ बहुत मसल होती हैं, ज्यादातर नर्व को तीसरी नर्व सप्लाई करती है, 3rd cranial nerve. तो you are improving your eyes, you are improving your, if you want to work on the diplopia, you want to work on the eye problem, you want to work on the facial nerve, facial paralysis, trigeminal neuralgia, any problem, the face, you can use this. तो हमने 3 CMP पॉइंट की बात की। ऊपर वाला तो सब में यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी नर्व की प्रॉब्लम। द ND1
we can be used for everything because it is the universal for everything. Middle one for parasympathetic, and this is for 12 cranial nerve. So now this is a homework. What is a homework? Just write down the name of 12 cranial nerve. See the Google and write down. Google में देख के लिखो ताकि एक बार आपको बस गो थ्रू हो जाओ. हाँ, cranial nerve नाम की कोई चीज होती है. Write down all the name of cranial nerve and function like vision, smell, so that you once go through and click the image and post in the group, any group, wherever you are. If you do this homework, I will be very happy because then I can make sure that you are understanding what is cranial nerve. Okay. और उसके नीचे लिखना है थर्ड, सेवेंथ, 9th, 10th are the parasympathetic. Okay, इतना आपको लिखना है. तो डन फॉर टुडे. नाउ विल सी टुमारो. अब हम कल मिलेंगे. एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? हाँ सर, एक सवाल पूछना है. सर, डॉक्टर वॉल के जो ये मेरिडियंस है उसमें डीजनरेशन क्यों लगाते हैं? मीन्स सब में डीजनरेशन मेरिडियन, जैसे स्किन डीजनरेशन, फैट डीजनरेशन. या एक्चुअली क्या होता है ना कि डॉक्टर बोल ने जब पॉइंट को जब डिटेक्ट किया तो उन्होंने वो अपनी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से डिटेक्ट किया था. ओके, डॉक्टर बोल हैज डिटेक्टेड ऑल द पॉइंट फ्रॉम द डिवाइस, सो ही वाज रनिंग द डिवाइस लाइक दिस, and as soon as he got the point, means this is the point, then you are not getting any sound, then again here, okay, so this is the point, this is the point, this is the point. So Dr. Wolf told wherever the problem is there, point will appear. So in the human body, with the age, we are getting multiple problems. Right? We are going towards the degeneration. हम daily degeneration की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने degeneration लगा दिया होगा. ये मेरा अंदाज, I don't know कि उन्होंने क्यों लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि उन्होंने बस दे दिया है ना कि this lymph degeneration point, because with the age everything is moving toward the degeneration. Everything है ना, मूव हो रही है कि नहीं हो रही, तो उन्होंने सबके आगे लगा दिया डिजनरेशन. अभी आप जब सीखोगे ना फाइब्रो डिजनरेशन, बहुत मजा आएगा. फाइब्रो डिजनरेशन तो इतना गजब का है ना भाई. फाइब्रो डिजनरेशन से हम कितनी सारी गांठों को पिघला सकते हैं. लाइक सर, फिर डिजनरेशन मतलब टोन करना पड़ेगा पॉइंट्स को? नहीं, डिजनरेशन का मतलब होता है कि उदाहरण के लिए कि अगर किसी को किसी की बॉडी में डिजनरेशन का मतलब ये है कि यानी कहीं पर गांठ बन गई फॉर एग्जांपल, या आपको तो निकालनी है ना उस गांठ को, तो जब हम चीजों को निकालते हैं तो हम सेडेट करते हैं. यहां पर डिजनरेशन का मतलब आप वो मत समझिए कि डेफिशिएंट मत समझिए कि प्रॉब्लम. तो जैसे फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग स्किन डिजनरेशन पॉइंट फॉर द स्किन प्रॉब्लम, बट स्किन प्रॉब्लम माइट बी बिकॉज ऑफ द high energies like urticaria, or might be because of the low energy like vitiligo, any problem. तो प्रॉब्लम हर पार्ट में जो होने वाली प्रॉब्लम हाई एनर्जी से भी हो सकती है, लो एनर्जी से भी हो सकती है. अब वो मेरिडियन का नाम दे दिया, मेरिडियन तो वही यूज करना. स्किन प्रॉब्लम तो हम स्किन डिजनरेशन मेरिडियन का यूज करेंगे. इसका मतलब ये नहीं हम टॉन करेंगे. डॉक्टर बोल ने कभी अपने अंदर टॉन सेडेट का यूज नहीं किया, उन्होंने तो हर पॉइंट को स्टिमुलेट किया, लेकिन हमने टॉन सेडेट ऐड किया है क्योंकि एज पर द डिसीज वी आर डूइंग टॉनिफिकेशन सेडेशन और वी आर डूइंग इवन मेथड. सो सर, नेवर मेरे ख्याल से फॉर वॉल वी ऑलवेज यूज चार्म मैग्नेट, नो? या आपका एक्चुअली ऐसा क्योंकि डॉक्टर बोल ने क्या हुआ कि डॉक्टर बोल का कंसेप्ट टीसीएम से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए वहां पर टॉनिफिकेशन सेडेशन नहीं है. इसलिए यू आर राइट, we are using the star magnet or we are using electric pen. जैसे डॉक्टर बोल नहीं. लेकिन अगर कई बार क्या होता है, हमें पता ही है कि इसको बहुत सीवियर साइटिका पेन हो रहा है और एक्यूट पेन है, बहुत
एग्रेसिव एनर्जी है, उस समय हम सेडेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट. Okay. Okay. डॉक्टर बोलने कभी नहीं किया, Okay. डॉक्टर बोलने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन हम कर सकते हैं एज पर अवर एनर्जी अंडरस्टैंड. Knowledge. या बट इफ यू वी Sir, स्टारविंग इज perpendicular ऑलवेज गुड. needling. क्या Perpendicular can needling we हो गया. use, sir, can we use Dr. Old points along with TCM or EOE? आप लेवल 2 में यही समझेंगे, क्योंकि लेवल 2 में है अच्छा, डॉक्टर बोल रहे हैं 9 हम्म। मेरिडियन. लेवल 1 में हमारे 9 मेरिडियन है डॉक्टर बोल के, Correct. और लेवल 2 में हमारे टीसीएम के मेरिडियन है जो डॉक्टर बोल ने ऐड किए. उन्होंने बीच बीच में कुछ पॉइंट दिए, तो वो Okay, sir. Thank you. डॉक्टर बोल ने बिल्कुल कंबाइंड किया, हम भी कंबाइंड करें. Okay. जी. सर नीडल हम परपेंडिकुलर नीडल करेंगे ना, ये जितने डॉक्टर भी बोलते हैं पॉइंट्स हैं. सारी निडल परपेंडिकुलर ही होती है और बोन के बॉर्डर पर होती है. वी आर पुटिंग द निडल ओके. ऑन द बॉर्डर ऑफ बोन. Okay, Does this any nerve help in glaucoma for It's patient? very, very effective for glaucoma. It's very much effective for glaucoma. I will tell you, Dr. Bol is the best treatment method for all the eye disease, for the problem of the retina, macula, glaucoma. I have treated many patients of the glaucoma, and I got very good results in the glaucoma. सर रेटिना डिटैचमेंट में भी अपन यूज कर सकते हैं. देखो रेटिनल डिटैचमेंट में क्या रहता है ना कि देखिए, सी व्हाट इज द रेटिनल डिटैचमेंट. रेटिनल डिटैचमेंट की बहुत एक्यूट कंडीशन है, उस समय हम पेशेंट को हाथ नहीं लगा सकते. लेकिन अगर पेशेंट अभी सेटल हो गया है और हमारे पास आया, तो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं. क्यों होता है रेटिनल डिटैचमेंट? जैसे एक बैलून में हवा भरो तो बैलून फूल जाता है, ठीक है. जी. अब हम पूछेंगे व्हाई द बैलून इज लाइक दिस, यू विल टेल बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड. If you reduce the pressure, then what will happen? Balloon will collapse. In the same way, inside the eyes, if we have high pressure, it will create glaucoma. If we are having lower pressure, it will do retinal detachment. So we have points of the, we have all the points, we have the points of the eye, each and every part we can stimulate. We have point for that in the Dr. Bol. We have separate discussion of the eye orbit meridian. Right? Okay. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. So Excuse me, sir. it's also common that we are having the sleep apnea, Yeah. So with this, we're all where the discussing. brain is totally dead. Actually, these all protocols will come afterward, after we understand all the points. Then we'll able to make the protocols, right? Okay. Sir, after glaucoma, the nerves are damaged. That will be, sir, recovery getting. Actually, if you ask medical doctor and allopathy doctor or the medical books, they will definitely tell you it's irreversible. It's irreversible. So that is what they are telling, sir. That's yeah. And even I will tell you, I got 2 patients came to me. One patient came with a very high intraocular pressure in the eyes, with the glaucoma and partial damage of the eyes. I treated, and patient got 100% relief. Pressure become less than 15, because the normal pressure should be near about less than 15 or 18 millimeter of mercury in the eyes. जैसे हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है ना 120 80, ऐसे आंखों का प्रेशर होता है 15 से 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. अब उस पे अगर प्रेशर 25 28 और मोर देन 30, दैट इज कॉल्ड हाई प्रेशर इन द आईज. तो मैंने पेशेंट को ट्रीट किया, पेशेंट सक्सेसफुली ठीक हो गया. अब पेशेंट डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला कि तुमको कभी ग्लोकोमा था ही नहीं, क्योंकि तुमको होता तो ठीक हो ही नहीं सकता था, तो तुमको ग्लोकोमा था ही. तो पेशेंट ने रिपोर्ट शो की, तो बोलता है रिपोर्ट गलत हो सकती है. पेशेंट ने 3-4 रिपोर्ट शो की, तो कहा, फिर डॉक्टर कोई आंसर नहीं कर पाया. ये पहला केस. पेशेंट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल नाउ इट इज. इवन उसको हेडेक भी नहीं होता अभी तो. नहीं तो इन द ग्लोकोमा पेशेंट इट्स वेरी कॉमन टू हैव द माइग्रेन हेडेक. The second patient I got, and he was having some little bit vision problem. I told, please start your treatment. Doctor, no. My allopathy doctor has told me that there is no any treatment of glaucoma. I told, at least you can start the treatment and let's see. No, I even visited AIMS
hospital and the topmost eye doctor of the India, and they also told that there will not be any improvement in the eyes. Okay, I told at least you can try. Patient told me no, I don't have faith that anyone can do improvement. Okay, after 2 years, patient came with a 100% blindness. Now see, I told him ट्राई कर लेते, ट्राई करने में तुम्हारी कौन सा तुम्हारा जा रहा था कुछ, चलो तुम्हारे जो भी 10-20 हजार रुपए खर्च होते वहां तो तुमने लाखों खर्च कर दी, अल्टीमेटली यू अवॉर्डेड विद द ब्लाइंडनेस. तो पेशेंट ने कहा नाउ यू कैन डू समथिंग, आई कांट डू एनीथिंग. फिर मैंने पेशेंट ही रिजेक्ट कर. देखो क्या होता है ना, हमें भी अपनी रेपो बना के रखनी पड़ती है क्लिनिक में. क्यों रेपो? कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट लेने से क्या होता है कि पेशेंट चाहे कैंसर का हो, वो तीसरे दिन ही देखेगा मुझे कितना इंप्रूवमेंट है. इवन थर्ड डे ही विल एक्सपेक्ट इंप्रूवमेंट फ्रॉम यू. आई हैव सीन, तो क्या होता है ना, अगर हमें लगता है ना कि पेशेंट इज नॉट हैविंग गुड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स कमिटमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट, तो हम मना ही कर देते भाई, वी कांट डू. 2 साल पहले हमने तुम्हें बोला था, तब तुमने मना कर दिया. अब तुम पूरी ब्लाइंडनेस के साथ, जब कुछ नहीं बचा तब आए हमारे पास, और तब भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई. Can you do something in 15 days? Because I can't do. In 15 days, I can't do it. तो क्या होता है ना, I will tell you, in the glaucoma, we have very good treatment. But we have to convince a patient a lot, because many patients are having fully brainwashed by the doctors. Okay, like you asked me, that's why I told you. ये बात मुझे भी लगती है कि नर्व अगर डिजेनरेट हो गई है तो पूरी हम रिजेनरेट तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट तो हम कर ही सकते हैं. स्लाइट इंप्रूवमेंट वी कैन डू, और जितना हो गया उसको वहीं रोक सकते हैं ऑन दैट पॉइंट. So I have used the master tone point which you had in the course, 55.01, right? So that I have used for high pressure in eyes. So for my husband, so it is like really helped. And now can I add this also along with 55.01? Yes, right. So that you add the mastering point, because mastering points you can add with this Dr. Bol points. No issue. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. ND4, right? Yes. Sir, but we will, no, eye discussion is remaining. Right now you can add ND4, but we have very detailed discussion of the eyes. That will come. But right now you can, as per current knowledge, you can use it. Okay, sir. सर पॉइंट दोनों हाथ में लगेगा. पॉइंट जिस तरफ प्रॉब्लम होती है या तो उस तरफ लगाते हैं या फिर बायलेटरल लगाते हैं. सर एक दोनों आंखों का पावर अलग अलग है. एक में 1.5 है, एक में 2.5 है, तो भी इसमें फायदा करेगा ये ND4. दोनों आंखों का पावर हमेशा अलग ही अलग होता है. कभी भी किसी की दोनों आंखों का पावर एक जैसा कम या एक जैसा ज्यादा नहीं होता. फायदा करेगा, जरूर करेगा. जैसे इसका किसी का 2.5, इसका 1.5, इसका 3.7, मतलब ऐसे सबका अलग ही अलग होता है. ऐसा नहीं होगा कि दोनों आंखें एक साथ एक ही तरह से उनका विजन डिक्रीज होगा, ऐसा कभी नहीं होता. हो सकता है. In that case we are putting bilateral. We will see that, we will come to that point, right? हम बताएंगे आपको कि कैसे पॉइंट लगाना है, सब बताएंगे आपको. वो आने तो दीजिए उस टॉपिक को. ओके सर, थैंक यू जी. और सर आपने बताया था कि पेरिकार्डियम 9 के बारे में कि यूरिन इन्फेक्शन में काम करता है. सर बिल्कुल काम करता है. मैंने देखा एक ही टाइम में 1 दिन लगाया, उसके बाद से सुबह से ही मेरे फायदा हो गया है ना. पेरिकार्डियम बहुत अच्छा. पेरिकार्डियम 9, हाँ, पेरिकार्डियम 9 बहुत शानदार पॉइंट है. सिंगल पॉइंट लगाया, उसी से इतना फायदा हो गया है. राइट, वेरी गुड. तो ऐसे कुछ रिजल्ट मिलते हैं तो ग्रुप में शेयर करिए ताकि और भी लोग सीख जाएं उसको, है ना. बहुत सारा दवाई करवा चुके थे लेकिन नहीं ठीक हो रहा था, लेकिन केवल यही करने से हो गया ठीक. यस, वेरी नाइस, वंडरफुल. किस चीज में सर पेरिकार्डियम 9? किसके लिए, कौन सा कंडीशन के लिए सर? शी विल एक्सप्लेन, बताइए. UTI के लिए. UTI, ओके. हमने डिस्कस किया था हमने. हाँ बराबर है. एक्चुअली आज मेरा पहला क्लास है.
कोई नहीं, वीडियो देख लीजिएगा, वो ग्रुप में हमने डाले हुए हैं वीडियो, हम इसका वीडियो भी यस डाल, सर। ठीक है। कितने दिन में करते, कितने दिन तक करते रहना पड़ेगा सर? ट्रीटमेंट आपको कुछ P9 या अगर आप कुछ आप करते रहिए, कम से कम 7 to 10 डेज ट्रीटमेंट करिए अभी, लगातार या गैप दे के? गैप देके करिए, एक एक दिन का गैप दे दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। So thank you so much everyone. Done for today. One more announcement. We will do class tomorrow, but Wednesday I will not able to do class due to some urgent schedule. और लेकिन हम आज और कल करेंगे क्लास, ठीक है। तो आपके जो भी प्रश्न है आप कल भी पूछ लीजिएगा, और कल हम और कुछ समझेंगे इसके बारे में, और जो भी हम पॉइंट सीख रहे हैं उसको अप्लाई करिए, और आपकी जो फीडबैक है वो ग्रुप में शेयर करिए, बताइए, ताकि सब लोग भी बेनिफिट ले सके। क्लास करने का पर्पज यही होता है कि हम उन पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा लोग सीख जाएं और अपनी फीडबैक एक दूसरे से शेयर करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू टुमारो। So tomorrow we have class, Thank you, sir. but Wednesday I am having some of my other schedule. Okay. Thank you so much. Let's close the session.